Hello students, today we are going to learn or solve 3.1 का third sum. The measure of angle of a triangle are x degree, x minus 20 degree and x minus 40 degree, and we have to find the measure of each angle. Okay, now as a given condition, we will draw the rough diagram of the triangle, okay, whose one angle is of x degree, another angle is of x minus 20 degree, and the last one, that is third one, is of x minus 40 degree. Okay, as we see the diagram, okay, we can understand this, that three angles are given but not the measure, but we know the property that the sum of measure of all the angles of a triangle is of 180 degree. Okay, so according to that, we will add this all angles. Okay, so x plus x minus 20 plus x minus 40 degree is equal to 180 degree. We have to mention the reason. Okay, then open the bracket. So we get x plus x minus 20 plus x minus 40 is equal to 180 degree. Now here 1x plus 1x, that is 2x, plus x, that is 3x, and here minus 20 minus 40 becomes minus 60. Now we want x is equal to, so we have to remove this minus 60 and also remove this 3. So with the x, this is in the form of subtraction. So we will add both sides 60, or you can directly write down that 3x is equal to 80 minus 60. Sorry, 80 plus 60. Okay. So here the 60 will be cancelled. So 3x is equal to 180 plus 60, that is 240 degree. To get the x, see here the 3 is in the form of multiplication. So on both sides we will divide by 3. So 3x upon 3 is equal to 240 upon 3. Here the 3 will be cancelled, and by cancellation we will get the 3 8s are 24. So 3 here 8 is 24, and here we have to keep the 0 for this. Okay, so we will get the value of x, that is 80 degree. Okay, now if I get the value of x, that is of 80 degree, so 80 minus 60, that is 60 degree, and 80 minus 40, that is 40 degree. And here also the second angle, that is x minus 20, that is x की value हम put down करेंगे, so we will get 80 minus 20, that is 60 degree. Also the third angle, that is x minus 40 degree, that is 80 degree minus 40 degree is 40 degree. So we will get the answer, write the answer. Okay. Now we will move towards the next sum. The measure of one of the angle of a triangle is twice the measure of its smallest angle. Okay, यानी क्या बताया है कि एक एंगल है, उसका मेजरमेंट जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल से डबल है. ओके, ये एक हमें कंडीशन दी है. एंड द मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस. थ्राइस यानी 3 टाइम्स. ओके, द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल. ओके, जो स्मॉलेस्ट एंगल है उससे एक दूसरा एंगल जो है वो थ्राइस है, 3 गुना है. And we have to find the measure of all 3 angles. Now for that, draw a rough diagram and consider this is, see, this is of smallest angle. अगर मैं ये एंगल को smallest angle consider करती हूँ, okay, तो बाकी का एक दूसरा जो है that is twice the smallest angle, and this is the thrice the smallest angle. Okay, अभी ये हमें पता नहीं है smallest angle क्या है, कि इसका ये डबल है और इसका ट्रिपल है.
तो हम इसको अज्यूम करते हैं, let the measure of the smallest angle of a triangle be x. ठीक है, हमें ये पहला स्टेटमेंट जो अज्यूम करते हैं वो लिखना है. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहाँ पे जैसे गिवन कंडीशन दी है कि भाई ये जो है एक एंगल जो है वो कैसा है, ट्वाइस है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सेकंड एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट. ओके, ये इसका स्मॉलेस्ट जो एंगल है उसका ट्वाइस है. सो ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स. ओके, ट्वाइस यानी टू टाइम्स. अगर टाइम्स बोलते हैं दैट मीन्स you have to put the sign of multiplication. Okay, twice the smallest angle. As we assume x as the smallest angle, we will put here x. So we will get 2x. And the another condition, that measure of the other is thrice the measure of smallest angle. So small thrice means 3 times. And see, the third angle is thrice the smallest angle. So 3 into, as we consider the smallest angle as x, so yeah, I put x. So the third angle is of 3x. Okay, now as we see, we don't know x, we don't know 3x, we don't know 2x, but we know the property that the sum of measure of all angles of triangle is of 180 degree. Okay, so we will put here x plus 2x plus 3x is equal to 180 degree and mention the reason. Okay, see now x plus 2x, that is 1x, और उसके अंदर मैंने 2x ऐड किया, that will be 3x, and उसके अंदर 3x में हमने 3x और ऐड किया, that will be 6x. So addition postulate. So 6x is equal to 180 degree. Okay, dividing both sides by 6, we will get the value of x, that is of 30 degree. Okay, so I will get the smallest angle. The smallest angle is of 30 degree. So by calculating, we will get that twice the smallest angle and also the thrice of smallest angle. So 2x means second angle जो है, that will be 2x is equal to 2 into 30, that is 60 degree, and the third angle, that is 3x, is equal to 3 into 30 is 90 degree. So the measure of the given triangle are 30, 60 and 90 degree. Now we will see the third. In the figure, measure of some angles are given. Using the measures, find the value of x, y and z. Okay, now just see the diagram. Okay, here in the diagram we had given, see in the textbook, if you consider the textbook, see here the exterior angle is given, that is of 100 degree, and here another exterior angle is given, that is 140 degree, and we have to find the x, y and z. Okay, if I consider the remote exterior angle, that is remote interior angle, so TEN is equal to x plus z. Okay, and likewise EMR is equal to y plus z. So this problem can be solved by 2-3 methods. Okay, so just one method I am explaining you, that we will get the two equation, that is x plus y is equal to 140 degree and x plus z is equal to 100 degree. Okay, so by solving the two equations,
we will get the value of x and then we can find the value of y and z. Okay, ये एक method हुई. Now another method. Now see, we can see here this is this angle, that is TEN and NEM. Okay, see, these both angles are in one line. Okay, so this we can consider is as linear pair. Okay, so 100 degree plus y degree is of 180 degree. Okay, so by that we can get the value of y, that is of 80 degree. Okay, now likewise यहाँ पे भी क्या है, एंगल z, that is angle EMN plus angle EMR is of 180 degree, linear pair. So from 180 we will subtract 140 to get the z. So this is of 40 degree. Okay, after that we can consider, see, y and z we got. Okay, so x, तो उसके लिए हम ये sum of measure of all the angles of a triangle is of 180 degree. This property we can use. Okay, so we will get the value of x. Okay, now we will see the sum. So here the angle TEN plus angle NEM is of 180 degree, angles in linear pair. We will put the value of TEN as it is given, that is 100 degree plus angle NEM that we have to find is equal to 180 degree. Okay, you can write or you can mention here the reason. Okay, subtracting both sides by 100. Okay, so we will get the value of y, that is of 80 degree. Okay, after that angle EMR plus angle EMN is of 180 degree. See here the linear pair, यहाँ पे 180 degree बन रहा है. Okay, so angle in linear pair, we will put the value of EMR as it is given, that is 140. So 140 plus EMR is equal to 180 degree. Then we will subtract 140 from 180 to get the EMN. So it is of 40 degree. So we will get the Z. Okay, so in triangle NEM, okay, x plus y plus z is of 180 degree. Okay, because the sum of measure of all the angles of a triangle is of 180 degree. We will have this 80 and 40. Okay, so instead of y and instead of z, we will put the 80 and 40, that their values. Okay, so angle x plus 80 plus 40 is 140. Okay, so you can first add and then shift it to the opposite side of is equal to, that is also you can do, or taking both sides uh, by or by subtracting both sides with 80 and 40. तो ऐसे भी आप कर सकते हो, and then you will get the value of x. Okay, or otherwise you can say that angle TEN is the exterior angle of this triangle. Okay, so so this TEN is equal to x angle x plus angle z. Okay, so here the angle x plus angle z is of 100 degree, remote interior angle.
So we know the Z, that is 40 degree. Okay. So likewise also we get the value of x, that is of 60 degree, or you can consider to find the x. This is the remote exterior angle. So, sorry, this is the exterior angle EMR. Okay, so remote interior angle कौन सा होगा? X plus y. Okay, so you can consider that x plus y is equal to 140 degree, and you can solve like this. Okay, and get the value of x, y, and z, that is of 60, 80, and 40. Now we will see the another example. Okay, now for that, see in figure 3.10, line AB, line AB is parallel to DE. अभी देखो दो लाइन अगर पैरेलल है तो हमने सेकंड लेसन में सीखा है उस हिसाब से, और ये जो है एडी जो है ट्रांसवर्सल होगी, तो उस हिसाब से हमें पता है, प्रॉपर्टी पता है, अगर पैरेलल लाइन है तो उसकी भी प्रॉपर्टी हमें पता है। कौन सी है? देखो, ये अगर मैंने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ओके, सो यहाँ पे F बन रहा है, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉन्ग्रुएंट ड्यू टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे जो एक्स मार्क के क्रॉस करके बताया है वो भी एंगल कैसा होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज दिस बोथ आर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। या ये अगर हम कंसिडर करते हैं, ओके, अगर ये मैं कंसिडर कर लूँ यहाँ पे, तो ये दो पैर जो है दैट इज ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला जो है एंगल वो भी कैसा है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो अगर दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल दी है, देख हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता है, फिर अल्टरनेट एंगल भी नो। ओके, अल्टरनेट एंगल में z बनता है, और जो z के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स है दैट इज कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, और दिस क्रॉस मार्क एंगल्स है वो भी कैसे होंगे? एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, interior angle, and we know the interior angles are of supplementary, that means x plus y is equal to 180. okay, अगर हमें पैरेलल लाइन दी है तो इतनी बात जो है हमें तुरंत ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट बुक देखते हैं तो यहाँ पे जैसे ये ए बी एंड डी ई आर पैरेलल लाइन है, तो ये AD इज व्हाट? ट्रांसवर्सल। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बन रहा है? अल्टरनेट एंगल बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, दैट मीन्स व्हाट? दिस BAD एंगल एंड ADE एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, so this is also of 70 degree. Okay, and what we have to find here? Find the measure of angle DRE. DRE we have to find out, and angle ARE. ARE. See, now again this problem can be solved by 2-3 ways. As we get the angle ADE, that is RDE, क्योंकि ये जो है कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स कैसे बताते हैं? A डैश R डैश D करके हम बता सकते हैं, ठीक है। सो दिस एंगल इज ऑफ 70 degree, this of 40 degree. So in this triangle we can find this angle DRE, because the sum of measure of angles of a triangle is of 180 degree. Okay, and with this
This angle, that is ARE, are the pair of linear pair. ओके, सो ये लीनियर पैर यानी ये एंगल अगर हमें मिल गया तो ये लीनियर पैर के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ए आर ई हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर रिमोट इंटीरियर एंगल से भी ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये जो है ये ट्राइंगल का ए आर ई इज द एक्सटीरियर एंगल, एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल? रिमोट इंटीरियर एंगल, और रिमोट इंटीरियर एंगल है दैट इज आर डी ई प्लस डी ई आर। तो यहाँ पे हमने अल्टरनेट एंगल थ्रू यहाँ पे पता चला कि ये 70 डिग्री है, तो 70 प्लस 40 करेंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स ट्राई, लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। Okay, see, first of all, the property from which we are solving this, so you have to mention what is given, that is line AB is parallel to line DE. Okay, हम उसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे इसलिए ये हमें पहले लिखना जरूरी है, that line AB is parallel to line DE, that is given, and line AD is the transversal. So by the alternate angle theorem, we will get angle BAD is congruent to ADE. Okay, and as we had given that BAD is of 70 degree. Okay, so ADE is also of 70 degree. Now see, I show with blue angles the remote interior angles. ओके, तो ये दोनों का सम होगा वो इसके जितना होगा, ठीक है। नाउ एंगल ARE is exterior angle of this triangle RDE. ओके, सो उसका एक्सटीरियर एंगल है, तो by theorem of remote interior angles, this ARE is equal to RDE plus DER. ओके, बट हम ये एंगल जो है ये ट्राइंगल का बता रहे हैं। ओके, सो ये ट्राइंगल का एंगल जो है दैट इज RDE हमें लिखना पड़ेगा, और ये जो है ADE वो भी सेम ही है। तो हमें ये बताना जरूरी है कि दिस आर कोलिनियर पॉइंट्स, so A dash R dash D. Okay, so this ADE is equal to RDE. Okay, क्योंकि सेम एंगल है। Okay, and by the remote interior angle हम ये कंसिडर कर सकते हैं। So measure of ARE is of 70 plus 40, that is 110 degree. ओके, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे लीनियर पैर बताया है। अगर लीनियर पैर नहीं बताना है तो हम तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो लीनियर पैर है दैट इज ARE प्लस DRE। ओके, रीजन लिखना है लीनियर पैर। ओके, ARE हमने फाइंड आउट किया है यहाँ से, तो ARE की वैल्यू लिखनी है दैट इज 110 प्लस एंगल DRE इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड with 110, so I will get the value of angle DRE that is of 70 degree. ओके, तो हमें जो दो एंगल बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए, ओके, DRE एंड ARE वो हमने फाइंड आउट कर दिया। नाउ see another sum, next sum. In triangle ABC, bisector of angle A and angle B intersect at point O. अभी
इसका मीनिंग क्या है कि एक हमने ट्राइंगल कंसिडर किया है ABC और बाइसेक्टर ऑफ ए एंड एंगल बी, यानी एक ऐसी रे खींची जो ए को इक्वली डिवाइड करता है, बाई यानी टू, और सेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स टू पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, तो वैसे ही ए को अगर टू पार्ट में डिवाइड किया और बी को भी टू पार्ट में डिवाइड किया, तो वो जो रे बनती है ना, वो कहीं ना कहीं मिलती है, दैट इज एट द पॉइंट ओ। ओके, और हमें और कुछ दिया है, दैट इज एंगल सी इज ऑफ 70 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड आउट द AOB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, एक रफ डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ की, दैट इज ABC और ACB ट्राइंगल हम कैसे भी लिख सकते हैं। नाउ बाइसेक्टर ऑफ ए, बाइसेक्टर करने के लिए मैंने क्या किया, रे ए टू उसको एक्सटेंड किया। ओके, तो बाइसेक्ट किया, यानी ये जो मैंने दो इक्वल सिंबल से बताया कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, इसको मैंने एक्सटेंड किया और यहाँ बी को भी बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट हमें पता है ज्योमेट्री में भी कैसे करते हैं, आर्क लेते हैं दोनों तरफ और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे जो इंटरसेक्टिंग आर्क है उससे हमने क्या करेंगे, दो आर्क ज्वाइन करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा रफली ड्रॉ किया है। सो दिस रे BO और दिस रे B, ओके, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है दैट इज O। जैसे यहाँ पे बताया है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल B इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, यानी ये दोनों जो बाइसेक्टर है वो O पॉइंट पर यहाँ पे मिलते हैं। ओके, और यहाँ पे दिया है 70 डिग्री, वो दिया है। अभी देखो हमें क्या करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है AOB। When you see the diagram, you can see that there are two triangles, that is ACB and also AOB. Okay, and these are the bisector. If I consider this as X and this is also X, because these are congruent angles. Okay, likewise this both are also congruent angle. So Y, and here is also Y. Okay, so if I consider this big angle and the as a property we know the sum of all the sum of measure of all the angles of a triangle is of 180 degree. At that time I have to add this angle C at angle A, that means this angle and this angle. So we will assume this as X. Okay, and so there will be, to find the value of CAB, that we will add CAO plus OAB, that means 2x. Okay, likewise for angle CBA, okay, ये एंगल हमें लिखना है तो भी हम क्या लिखेंगे, एंगल CBO प्लस एंगल OBA and both we consider as Y. Okay, so for the sum of this triangle, okay, sum of measure of all the angles of this triangle is of 180 degree, that means 70 degree plus 2x plus 2y, we will get 180, and by that we will get the value of x and y. And we consider, if we consider this triangle AOB, okay, that means x plus y plus this AOB, that is of 180 degree, as we will get the x and y from this bigger triangle. Okay, we will get the AOB. Now we will solve the problem. Now as we know the ray, हमने bisector हमें बताया गया है, so ray AO is the bisector of angle CAB.
बी। तो हमने यही बताया है कि उसकी वजह से क्या होगा, एंगल सी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ ए बी। ओके, क्योंकि बाइसेक्ट किया है रे ने। ओके, और हमने वो कंसिडर किया है एज एक्स। तो हमने ये किया है, लेट एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज ऑफ एक्स डिग्री, consider as 1. Okay, likewise angle CBO is congruent to angle OBA because ray BO bisect angle CBA, and we will assume this both angles are of y degree. So उसको हम नंबर देते हैं 2. ओके, नाउ एंगल एडिशन पोस्टुलेट। ओके, मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि अगर मुझे सी ए बी लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक्स, ये एंगल और ये एंगल को क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। वैसे ही अगर मुझे सी बी ए चाहिए तो ये एंगल और ये एंगल को मैं एडिशन करूंगी तो मुझे सी बी ए मिलेगा। तो यहाँ पे यही बताया है कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ प्लस एंगल ओ ए बी। Okay, so we will get the value of angle, that is CAB is of 2x. Okay, and similarly we will get the angle CBA is of 2y. Okay, now in triangle CAB, एंड ट्राइंगल लिखने वक्त कैसे भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, ए बी सी भी लिख सकते हो, सी ए बी भी लिख सकते हो और सी बी ए भी लिख सकते हो। ओके, फिर वहां पे जो है हमें तीनों एंगल बताना है, दैट एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इज ऑफ 180 डिग्री, और उसका हमने रीजन मेंशन करना है, दैट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is 180 degree. Okay, as we know the angle of C, that is of 70 degree, and here 2x and 2y, so we will add. Okay, so from 3 and 4 हमने यहाँ पे 2x और 2y लिखा. Okay, after that this 70 is shifted towards the opposite side of is equal to, so it becomes minus, and we will take the 2 common for both, so we will remove the common factor, that is 2, so 2 into bracket x plus y is equal to 180 minus 70 degree. So we will get the value x of y, यहाँ पे हमने common निकाला था, so dividing both side by हमने जो यहाँ पे जो है डिवाइड किया है, किससे किया है, 2 से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2. और वैसे भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड by 70. So we will get the value of x plus y, that is of 55 degree, and we will consider as number 5. Okay, now for the triangle AOB, okay, we will also use the same property, that angle AOB plus angle OAB plus angle OBA is of 180 degree. The sum of measure of all angles of a triangle is 180 degree. Okay, so
angle AOB that we don't know, but we know the x. Here, this angle is of x and this angle of y. Okay, so angle AOB plus x plus y is 180 degree from 1 and 2. Okay, and AOB, see x plus y is of 55. So from the 5, we will get the x plus y. So we have to write the reason. So again, subtracting both sides by 55. So we will get the value of angle AOB, that is of 125 degree.